सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप एक जॉब सीकर हो या वुमेन हो या इवन अ स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करे बिकॉज आई हैव वर्कड ऑन द जॉब मार्केट, हाउ टू सक्सीड इन द जॉब मार्केट ऑफ 2025 एंड ऑल्सो बियॉन्ड। तो I have recently came across a World Economic Forum's Future of Jobs report 2025, and by working inside that report I came to know so many stats. So I'm going to share here in my video. Watch till end. So did you know that by 2030, over 170 million new jobs are expected to be created, that too globally? Or India is the center of this transformation. So again, अगर आपको actionable advice चाहिए and you want to prepare yourself for this future, don't forget to subscribe to this channel and hit the bell icon for more career strategies. और अगर आपको इस रिपोर्ट की पूरी कॉपी चाहिए then please comment below future jobs and I will DM it to you. So now coming to the reports and the stats. Now here is a question. Are you ready for a future जहाँ पर 39% of your skills they are going to become outdated? Or do you want to stay ahead, you know, stay ahead of the curve so that you win those fast growing roles and the skills in demand? So number one we are going to discuss here is the Indian job market landscape. Okay, so what is changing? नंबर वन इज टेक्नोलॉजी. यू नो दैट AI आ गया है, बिग डेटा आ गया है, ऑटोमेशन आ गया है. These three areas are actually reshaping the complete industries. Okay, और जो फास्टेस्ट ग्रोइंग रोल्स हैं वो AI के हैं, मशीन लर्निंग के हैं, देन डेटा एनालिस्ट, रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर्स. ठीक है, सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर आप टेक सेवी नहीं हो देन प्लीज स्टार्ट लर्निंग दी स्किल्स लाइक प्रोग्रामिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिसिस, प्रोवाइडेड यू हैव इंटरेस्ट, you have passion to learn this. Don't go by trends. Number two is green economy. Green economy बहुत rise पे है, which which means that there is a demand for renewable energy engineers and environmental specialist. Okay, ये boom कर रहा है बहुत ज़्यादा. Number one is you can be that renewable energy engineer अगर आप एक student हो. You can go by educational pathways where you can do a undergrad degree in that. ठीक है, there is a bachelor degree in relevant fields like electrical, mechanical, chemical. Okay, so बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि स्पेशलाइज प्रोग्राम रन करते हैं इनसाइड दिस, लाइक स्पेशलाइज प्रोग्राम इन रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल IIT रुड़की है, दे आर ऑफरिंग BTech इन एनर्जी इंजीनियरिंग. ठीक है, और IIT रुड़की इज ऑल्सो ऑफरिंग स्पेशलाइजेशन in as a master degree where you can enhance your expertise. Now there is another institute which is Terry School of Advanced Studies जो कि न्यू दिल्ली में है. They offer MTech in renewable energy engineering and management. So जो Terry School of Advanced Studies है, they are helping students to get that label environmental specialist. Or they can the students can also do undergrad degree and obtain a bachelor degree in environmental science, environmental engineering. Okay, so that is a mind blowing thing. While you can also do a postgrad degree and a master degree, which will give you advanced knowledge, better jobs. An institution like IIT Delhi, they offer that specialized program in environmental studies. Okay, now coming to my woman, where I want to really give so much value to women because I have a soft corner for women. So women who are having a background for engineering, they can transition into renewable energy or environmental role because बहुत rewarding career है. Okay, so you need to upskill, you need to get certified, specialized certifications करने होंगे. You need to align your engineering degree with the renewable energy or environmental science. ठीक है, so here also I have did little bit research in that,
एंड सोलर एनर्जी डिज़ाइन है और उस इंस्टॉलेशन है, उसके बहुत सारे कोर्स हैं कोर्सेरा पे, यूडेमी पे। अपार्ट फ्रॉम दैट द IIT Delhi, NPTEL, they are also offering some course in renewable energy technology, so go for that. In fact, again there is a Terry University जो कि इंडियन एनवायरमेंटल सोसाइटी उनके पास है, एंड दे आर डूइंग दिस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. Apart from that, there is a LEED Green Associate certification for environmental design and construction. So India invest कर रहा है बहुत ज़्यादा in sustainability, which means that India is making green jobs as a top priority. नेक्स्ट जॉब्स जो बहुत ज़्यादा बूमिंग है वो है केयर एंड एजुकेशन जॉब्स, which means that जो नर्सिंग प्रोफेशनल्स हैं या जो टीचर्स हैं दे आर गोइंग टू सी अ रैपिड ग्रोथ बिकॉज इंडिया के डेमोग्राफिक्स ऐसे हैं. सो मैनी अ टाइम्स हम आस्क कि अगर एक हाउस वाइफ है और उसके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री है, so can she upskill to become a nursing professional or a teacher? Okay, because both of them are experiencing significant growth in India, right? So I will tell you how you can go into either path. Number one is pursuing a career in nursing. Again, अगर आपने अभी तक एजुकेशन नहीं लिया है, यू हैव दैट 10+2, देन यू कैन गो द एजुकेशनल रूट वेर यू कैन डू दिस जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM डिप्लोमा. 3.5 साल का प्रोग्राम है. इट इज सूटेबल फॉर दोज हु हैव completed 10+2 with a science background. Okay. Number two is they can also go for a 4-year degree program that also requires 10+2 with physics, chemistry, and biology, which is called the BSc nursing. They can go for that. While अगर आप already graduate हैं and if you want to upskill, then there is upskilling opportunities that is developed by Apollo MedSkills and it is delivered by TCS Ion. ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो कि ऑलरेडी नर्सिंग ग्रेजुएट्स हैं एंड दे वांट टू एनहांस देयर स्किल्स. Okay, then there is a national skill network, NSN, which is by Apollo Hospitals. And these are also some upskilling programs. बिकॉज क्या होता है ना, ये अपस्किलिंग प्रोग्राम्स एडवांस ट्रेनिंग होते हैं नर्सेस के लिए, सो दे ओपन डोर्स फॉर इवन ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज. Okay, so now coming to pursuing a career in teaching, again you can go by education route where you can do the B.Ed, which is a 2-year program required for teaching. Okay, at secondary and higher secondary levels, because the eligibility includes that you have to have a graduation degree with minimum marks of 50%. Now you can also try doing diploma in elementary education, which is also a 2-year diploma for teaching at elementary level, which also requires 10+2 with at least 50% marks. Now there are upskilling opportunities also, like you can do some professional development courses. Like there is a up educators that which offers courses like Google certified educator and Microsoft certified educator, so that you enhance your digital teaching skills. Okay, so up educators क्या करते हैं, they actually do conduct such kind of programs. और nursery teacher training भी कर सकते हो if you are into early childhood education. Entity programs तो आप लोगों ने सुने ही होंगे, that provide the specialized training. Okay, so there are certain other platforms like Sanskari Sudhar, which assist women in rejoining the workforce by providing job opportunities and upskilling programs that is specifically tailored for those who are seeking flexibility after career breaks. So there is another project which is the Bharat Upskill Project. एकदम फ्री ऑनलाइन इनिशिएटिव है दैट इज डिजाइन टू हेल्प इंडिविजुअल्स लर्न फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड मेक इन्फॉर्म्ड करियर चॉइसेस. तो भारत अपस्किल प्रोजेक्ट अगर आपने करना है तो गो फॉर इट, इट इज एब्सोल्युटली फ्री. अगर आप लोग यू लव वर्किंग विद पीपल, these are the fields you can explore. Now, what not to do? Please ignore these trends. इफ़ यू आर थिंकिंग कि ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे पैशन से मैच नहीं करता है, ओके, सो डोंट डू दैट. अगर आपके पैशन से ये ट्रेंड्स मैच करते हैं, देन ओनली गो फॉर दिस.
बिकॉज जॉब मार्केट बहुत इवॉल्व हो रही है. But that doesn't mean that you go with a choice which is of not your passion. Okay, now let's talk about what skills employers want by 2030. Now there are top skills for success. Number one is analytical thinking. Still the number one skill employers want, बिकॉज एम्प्लॉयर्स चाहते हैं कि आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कैसे क्रिटिकली सोच रहे हो. एंड another thing the employers want is, with the world changing so fast, they want you to be resilient, be adaptable, be flexible, because that is a skill which is absolutely non-negotiable. ठीक है. नेक्स्ट इज दे वॉन्ट यू टू बी टेक लिटरेट. AI skills आपके पास होनी चाहिए. AI, बिग डेटा, दैट आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्किल्स. और आज की डेट में इतनी मार्केट इवॉल्व कर रही है कि इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा. एंड होम मेकर्स विद अ ग्रेजुएशन डिग्री आर ऑल्सो वेल पोजिशन्ड, ओके, टू टैप इन टू दिस ग्रोथ. बिकॉज जिस जो डिमांड है AI की, मशीन लर्निंग प्रोफेशनल्स की इंडिया में, दैट इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग. जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है विद द एनुअल ग्रोथ रेट बिटवीन 14% एंड 47%, ये वाला प्रोफेशनल्स का डिमांड भी उतना ही ग्रो कर रहा है. तो बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024, हायरिंग फॉर मशीन लर्निंग डेटा रिलेटेड रोल्स इतना बढ़ गया था, 102% ईयर ओवर ईयर. Okay, so why I'm saying that homemakers, women should always consider upskilling in AI and big data, because given कि इसकी बहुत डिमांड है, टेक इंडस्ट्री इज एक्सपीरियंसिंग अ सर्ज इन डिमांड फॉर रोल्स, डेटा एनालिस्ट, बिग डेटा स्पेशलिस्ट. ये ट्रेंड इतना इंडिकेट कर रहा है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं. ओके, देन देर इज अ फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटी. सो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं विच ऑफर्स AI, बिग डेटा के कोर्सेज, which allows people to learn at their own pace and at their own schedule. For example, Skill India Digital Hub hai that is providing free courses and skill development schemes across the sectors, including IT, including AI. The website is given in the bio, in the description. Now there is a growing community of women in tech. So what I have seen through this report, that there is an increase in women professionals in India enrolling in AI and generative AI courses to upskill themselves for the leadership role. So इससे क्या पता चलता है कि इम्पोर्टेंस तो बढ़ रही है AI स्किल्स की मॉडर्न वर्कफोर्स में, बट साथ के साथ जो वुमेन हैं दे आर continuously learning for in various sectors, in various areas, so that they become the leader. Okay, so economic times के सर्वे से पता चला है कि they are learning. Now how you can take step to begin your upcycling upskilling journey. Number one is assess your interest and goals. That is the number one thing. Bring clarity. So determine कौन से ऐसे areas हैं AI में भी और big data में भी that align with your interest, with your career objectives. Number two is enroll in relevant courses. Like you can utilize platform like Skill India Digital Hub, where you can find courses which is very much suitable for your learning style and schedule. Okay, number three is join supportive communities. So engage with the online forums, local groups of women in tech to share your experience, your resources, and you can encourage each other. Okay, number four is apply your skills. Seek internships, freelance project, or even you can volunteering to gain that practical experience and build your portfolio around. Okay, so ये overnight तो होने नहीं वाला, but then when you do it consistently, it will reap you good results. नाउ यहाँ पर एक एक्शनेबल टिप ये है कि टेक कोर्सेज इन AI टूल्स और डेटा विजुअलाइजेशन, बिकॉज यू कैन डेफिनेटली टेक हेल्प ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स. नाउ देयर इज अनदर टिप हियर इज क्रिएटिव थिंकिंग. इनोवेशन बहुत ज़रूरी है. सो एम्प्लॉयर्स व्हाट दे वांट इज वो वाले प्रॉब्लम सॉल्वर्स जो कि आउटसाइड द बॉक्स सोचते हैं. And what not to do here is, don't rely only on your qualification or your degree. So
रिपोर्ट क्लियरली बताती है कि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर स्किल्स एंड नॉट डिग्रीज, विच मीन्स दैट आपकी स्किल्स हैं, दैट इज अ करेंसी ऑफ द फ्यूचर. Now let's come to the part 3 of this video. Silent job displacement. Are you at risk? So, clerical roles like data entry, clerk, cashier, administrative assistant, they are going to be vanished over the period of time. Why? Because automation and AI are taking over that repetitive task. Okay. And how to avoid being replaced? Number one is upskill into tech focused or human centered roles like cybersecurity or counseling. Okay. Number two is I always tell my students, stay curious, learning is your asset. So lifelong learning is your best defense against redundancy. So what not to do? Don't stick around to outdated rules. Okay. If your job can be automated, you need to pivot now. Okay. Now part 4 of this video is the green transition and the India's role. As I talked about, there are opportunities in sustainability. Climate change बहुत ड्राइव कर रहा है फॉर द डिमांड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, एनवायरमेंटल इंजीनियर्स. और एक फन फैक्ट बताती हूँ यहाँ पे, इंडिया इज वन ऑफ द ग्लोबल लीडर इन ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट. सो आपका चांस है यहाँ पर टू shine in this sector. So I will tell you what not to do here. Don't ignore the green skills. So अगर आप इंजीनियरिंग में नहीं भी हो, अगर आपका environmental literacy नहीं भी है, then also start looking at it. Okay, start going deeper, stay curious and understand what it is maybe you are passionate about but you are overwhelmed with the terms. Okay, part 5 of this video is your action plan for 2025. So what you should do starting today. Number 1 is audit your skills. ठीक है, आइडेंटिफाई करो क्या आउटडेटेड है और क्या आपको सीखना है. ओके. नंबर 2 इज लर्न इन दीज डिमांडेड स्किल्स. एक स्टेप लो डेली का. Maybe you are going to enroll in a tech course, maybe you're going to attend a webinar on this to understand if your passion is aligned with this trend. Number 3 is now once you're clear about what you want to do, what you are going to offer, then build a strong personal brand. So how to do that? Update your LinkedIn, optimize your LinkedIn, and then showcase your skills, start networking. नेटवर्किंग की मेरी बहुत डिटेल्ड वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, गो वॉच दोस. एंड एम्प्लॉयर्स दे वांट विजिबिलिटी. ओके, एंड दे वांट प्रोएक्टिव कैंडिडेट्स, आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाले कैंडिडेट्स. सो थिंक अबाउट दैट. ओके, व्हाट नॉट टू डू इज कभी अपॉर्चुनिटी खुद से आपके घर पे नहीं आएगी. यू नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ योर करियर, टेक एक्शन, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर करियर. इंडिया की जॉब मार्केट इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज. ये मिथ है कि आपको जॉब नहीं मिल रही है तो इंडिया की जॉब मार्केट खराब है, बट जॉब मार्केट अच्छी है. यू जस्ट नीड टू अडाप्ट एंड ग्रो बिकॉज स्किल्स सब कुछ है, डिग्रीज उसके नीचे है. सो कमेंट फ्यूचर जॉब्स अगेन below this video, and if you want to get access of full report and start preparing for your dream career today, and don't forget to like, share, subscribe so that we can bring more insights for your career. See you in the next video.